Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start with the common carotid artery. Common carotid artery is the branch of right one is the branch of brachiocephalic artery, and the left one is the direct branch of arc of aorta at the level of sternoclavicular joint. The left common carotid is the branch of arc of aorta at sternoclavicular joint. The termination of common carotid artery and the beginning of internal carotid artery has slight dilation known as carotid sinus. Carotid sinus is the site or baroreceptor, pressure receptor. It regulates the blood pressure. Whereas there is an oval reddish brown body located at the bifurcation of common carotid artery known as carotid body. Carotid body has rich nerve supply and it serves as the chemoreceptor, senses oxygen, carbon dioxide, pH content of the blood. All these are supplied by vagus nerve, which is enclosed along with them in the carotid sheath. The carotid sinus is richly supplied by the nerves, so when the head rotates and it causes the slowing of heart due to the change in the pressure, and this is called as carotid sinus syndrome, and it can be treated by controlled by carotid sinus massage. Carotid sinus massage has inhibitory effect on the vagus nerve on the heart. Then we have to start with the external carotid artery. External carotid artery is the terminal branch of common carotid artery. Is one of the terminal branch. The other one is the internal carotid artery. Common carotid artery has a course. External carotid artery begins in the carotid triangle. Carotid triangle we have discussed in the later video. At the level of upper border of thyroid cartilage. This is the thyroid cartilage, and at the upper border of thyroid cartilage there is bifurcation of common carotid artery into the internal and external carotid arteries. External carotid arteries arises between third and fourth cervical vertebra, and it passes slightly backward laterally and terminates in neck at the neck of mandible by dividing into the maxillary and superficial temporal artery. This is the maxillary artery and this is superficial temporal artery. In the carotid triangle, which lies here, not exactly but like this, and it lies on the under the cover of anterior border of sternocleidomastoid. When we remove sternocleidomastoid muscle, this is the sternocleidomastoid removed. If we place it back, then external carotid artery can't be seen because it is not superficial, but it is superficial to retromandibular vein and facial nerve. These all structures are passing through. These all structure lies deep in the substance of parotid gland. The internal carotid artery lies deep to the external carotid artery, and the structure passing between these two are styloglossus muscle, stylopharyngeus muscle, both arising from the styloid process, glossopharyngeal nerve, and the pharyngeal branch of vagus nerve. All passes in between the internal and external carotid. What are these? Styloglossus muscle, stylopharyngeus muscle, glossopharyngeal nerve, and vagus nerve pharyngeal branch. Then we have to deal with the branches of external carotid artery. We have a say mnemonic for it. This is FLOP SMS. F for facial artery, A for ascending pharyngeal artery, L for lingual artery, O for occipital artery, P for posterior auricular artery, then S for superior thyroid artery, M for maxillary artery, and then S for superficial temporal artery. FLOP SMS. Facial artery, ascending pharyngeal artery, lingual artery, O for occipital artery, P for posterior auricular artery, S for superior thyroid, then M for maxillary, and then S for superficial temporal artery. As we come to know by the diagram that superior thyroid artery supplies the parotid gland and the thyroid cartilage, and also give a branch to sternocleidomastoid muscle. Then this one is the lingual artery. Lingual artery arises from the external carotid artery at the greater cornua of thyroid cartilage, and then it is tortuous in its course. First part lies in carotid triangle, and the next which is crossed by the hypoglossal nerve, and the lingual loop permits free movement of hide bone. Second part is deep to hyoglossus, and the third part lies at the arteria profunda lingua or deep lingual artery, which enters runs upward along the anterior border of hyoglossus and under the surface as the fourth part. It gives branches to suprahide muscles and dorsal lingual muscle and sublingual muscles. If we have to surgically remove the tongue, then first part of the artery, which is related to the greater cornua of thyroid, has to be ligated before the surgery. The next one is the facial artery. We have already studied it in detail. It arises at the tip of the greater cornua, has a tortuous course at the angle of mandible, comes and gives superior and inferior labial artery. ये हमारे पास जो है ना फेशियल आर्टरी, ये वाली ये हमारे पास सुपीरियर लेवल दे रही थी, इंफीरियर लेवल दे रही थी और एक्सटर्नल नेजल दे रही थी, और एंड पे एंगुलर वेन के साथ, एंगुलर आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस कर रही थी, ठीक। और इन्होंने इधर ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे भी वाइंड अराउंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे सब मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा हुआ होगा, और जो हमारे पास इसका फेशियल पार्ट है वो एंट्रो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मेसेटर पे हम इसको फील भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास इसके मजीद ब्रांचेस वो कौन सी हैं? असेंडिंग पैलेंटाइन ब्रांच देगी एक, और ये हमारे पास जो है ये असेंडिंग पैलेंटाइन आर्टरी देगी, आई थिंक सो दिस वन, एंड असेंड सबमेंटल आर्टरी देगी बिहाइंड द मैंडिबल। ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है वो हमारे पास कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर जो है हमारे पास स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को ब्रांचेस देगी। दिस वन इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो है हमारे पास
पास बैक ऑफ ऑरिकल को सप्लाई करेगी, मेस्टोइड प्रोसेस को सप्लाई करेगी और हमारे पास बैक ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करेगी। ये वाली जो है हमारे पोस्टीरियर ऑरिकुलर है और ये जो पहले पॉइंट आउट की थी असेंडिंग फ्रेंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जो हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑरिकल पे आएगी, बैक ऑफ ऑरिकल और स्किन ओवर मेस्टोइड प्रोसेस बैक ऑफ स्कैल्प को सप्लाई करेगी और हमारे मिडल एयर और मेस्टोइड इंटरम एयर सेल वगैरह को सप्लाई करेंगे। असेंडिंग फ्रेंजियल एक स्मॉल ब्रांच है जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड की है। ये हमारे पास जो है ऑडिटरी ट्यूब वाली साइड पे जाएगी। ये हमारे पास जो है मेनिंजियल ब्रांचेस देगी क्रेनियल कैविटी को थ्रू फोरामिन लेसेरम। मैक्सिलरी आर्टरी लार्ज टर्मिनल ब्रांच है और ये हमारे पास बैक ऑफ बिहाइंड द नेक ऑफ मैंडिबल हमारे पास पड़ी होगी और कवर करेगी अंडर द कवर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड और इंफ्राटेम्पोरल फोसा के अंदर हम इसको सही से स्टडी करेंगे। इसकी आगे फुल डिटेल है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की बात करें तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी टर्मिनल ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ये हमारे पास रूट ऑफ जाइगोमा पे क्रॉस करती है और ये हमारे पास इसकी पल्सेशन जो है वो हमारे पास इजीली फेल्ट कर सकते हैं हम इसको। जाइगोमा यानी कि जाइगोमेटिक आर्च के एंटीरियर एंड से हमारे पास 5 सेंटीमीटर अबव इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन हो जाती है जो कि आगे टेम्पल और स्कैल्प आ जाएगा, उसको सप्लाई करेंगी। और इसी की एंड पे हमारे पास एक आ जाएगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी जो कि हमारे पास जो है पैरोटिड ग्लैंड में पड़ी हुई होती है। नेक और हेड की स्पेसेस की बात करें तो सब मेंटल स्पेस होती है जो कि सब मेंटल ट्राइंगल में होगी, सब मैंडिबुलर स्पेस होगी जो कि डायगैस्ट्रिक ट्राइंगल्स में होगी और हमारे पास सब पैरोटिड स्पेस होगी। पैरोटिड स्पेस पैरोटिड ग्लैंड की साइडों पे होगी, पैराफ्रेंजियल फेरिंक्स की साइडों पे होगी, रेट्रोफ्रेंजियल फेरिंक्स के पीछे होगी और हमारे पास पेरिटॉन्सिलर पैलेंटाइन टॉन्सिल के आगे पीछे होगी।